Hello kids, how are you? So, I hope you are waiting for a new chapter in your English class. So, here I am back with something new and interesting. And today we shall start with a new chapter, that is chapter number 11 of your book, that has the title Birth of Months, यानी महीने, महीनों की उत्पत्ति कहाँ से हुई. Children, you must have studied about various months since your childhood. हम बचपन से अलग अलग months के बारे में पढ़ते आए हैं, right? We have 12 months in a year: January, February, March, April, May, June, and so on, right? So there are 12 months. But have you ever wondered कि ये months कैसे start हुए, किन लोगों ने इनका नाम रखा, ये हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस? कभी ऐसे सोचा है कि जनवरी में 31 डेज ही क्यों होते हैं, फेब में 28 डेज क्यों होते हैं, किसी किसी ईयर में 29 डेज क्यों होते हैं, लीप ईयर होता है ना, राइट? So many questions and so many mysteries are there, right? So today we are going to unveil all these mysterious things about months. आज का जो चैप्टर है उसमें हम यही पढ़ेंगे कि ये जो महीने हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ठीक है? यानी ये जो महीने हैं ये कहाँ से एग्जिस्टेंस में आए, हु स्टार्टेड ऑल दिस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स बिगिन द चैप्टर. We have 12 months in a year. That is something very, very true. We all know that in a year there are 12 months. In this chapter, you will study how the months got their names. So, in this particular chapter, we are going to know that how did we name the months. ये जो नाम है January, February, March, ये नाम months को कहाँ से मिले. So, let's begin. Our present calendar is known as the Gregorian calendar, named after Pope Gregory, who enforced its present format in 1582. जो हमारा अभी का कैलेंडर है जिसमें ये मंथ्स रहते हैं जैन टू दिसंबर, इस कैलेंडर को कॉमनली लोग जो हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं और ये पोप ग्रेगोरियन के नाम से पॉपुलर हुआ था. ऑलराइट, ही हैड एनफोर्स दिस फॉर्मेट, मतलब ये जो फॉर्मेट है कि जनवरी में 31 डेज रहेंगे, फेब्रुवरी में 28 या 29 डेज रहेंगे, देन मार्च में सो ऑन, इस तरह जो डेज का जो कॉन्सेप्ट है कि किस महीने में कितना रहेगा या कौन से मंथ के बाद कौन सा आएगा. इंग्लिश कैलेंडर इफ वी टॉक अबाउट इन पर्टिकुलर, वो उन्होंने ही ये फॉर्मेट प्रपोज किया था. एंड इन विच ईयर ही प्रपोज दिस फॉर्मेट? इन ईयर 1582. ऑलराइट, सो क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, काफी पुरानी बात है. It is based on a calendar proposed by Julius Caesar. Now, Julius Caesar is a very, very famous character. He's a very, very popular person. So, he had proposed this. He was a great Roman emperor. So, who was Julius Caesar? He was a great Roman emperor. रोम के एक बहुत ही फेमस किंग थे, ठीक है? उनका नाम था जूलियस सीजर और उन्होंने इनिशियली एक फॉर्मेट डेवलप किया था और फर्दर पोप ग्रेगोरियन ने उस फॉर्मेट पे वर्क करके प्रेजेंट डे कैलेंडर को डेवलप किया. क्लियर? In fact, Julius Caesar's own calendar or the Julian calendar was itself based on an ancient Roman calendar. और जूलियस सीजर ने जो कैलेंडर बनाया था वो एंशियंट रोमन कैलेंडर के ऊपर बेस्ड है, यानी रोम में जो कैलेंडर फॉलो किया जाता था उसके ऊपर बेस्ड है. क्लियर? द ओल्ड रोमन कैलेंडर हैड 10 months. ठीक है, जो ओल्ड पहले बिल्कुल प्राचीन रोमन कैलेंडर हुआ करता था उसमें टोटल 10 महीने थे. ऑलराइट, द फर्स्ट बीइंग द मार्च. और कहाँ से शुरुआत होती थी, कौन सा मंथ? अभी फर्स्ट मंथ कौन सा है प्रेजेंट डे कैलेंडर में? जनवरी. बट जो पुराना यानी प्राचीन रोमन कैलेंडर हुआ करता था उसमें फर्स्ट मंथ होता था मार्च. But Julius Caesar added 2 more months in the beginning to make it 12-month calendar. और जूलियस सीजर ने क्या किया, उस पुराने रोमन कैलेंडर में 2 और मंथ्स इनिशियल स्टेजेस पे यानी स्टार्टिंग में जोड़ दिए. दैट इज
12-month calendar. It had 365 and 1/4 of the day. We know now that 1 year equal to 365 days and 6 hours precisely. और यही जो 6 घंटे हैं यानी 1/4 of the day जिसको हम ऐड करते करते 4th ईयर में एक दिन बढ़ा देते हैं उसको हम लीप ईयर बोलते हैं, राइट? Caesar's calendar year were 11 minutes and 14 seconds longer than the actual calendar. This meant that after every 128 years, the calendar would lag behind by 1 day. However, this was later amended in 1582 by then Pope Gregory XIII. Alright, this is Roman number में लिखा हुआ है 13th. A leap year was added after every 4 years. It was suggested that among all the years with the last 2 digits as 00, like 1600, 1700, etc., only those years would be leap years which are divisible by 400. This removed all the anomalies and thus the Julian calendar became a perfect calendar. So Pope Gregorian ने क्या किया, जूलियस सीजर ने जो कैलेंडर प्रपोज किया था उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, उसको और बेहतर बनाया और उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि ये जो एक्स्ट्रा आवर्स हैं इनको ऐड करके हम हर 4 साल बाद एक लीप ईयर प्रपोज कर दें जिसको आज की डेट में हम लोग मानते हैं. क्लियर? The names of the month in the present Gregorian calendar are taken from the ancient Roman months of the Julian calendar. तो जूलियस सीजर ने जो कैलेंडर डिजाइन किया था, जो नेम्स हम मंथ्स के अभी पढ़ते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब उस पुराने कैलेंडर के ही नेम्स में से दिया गया है. January derives its names from two-faced Roman god that is Janus. ठीक है, जनवरी आता है, एक रोमन गॉड है जेनस, उनके नाम से जो है जनवरी मंथ का नाम आता है. He was the god of doors, beginning, sunset and sunrise. ये किस चीज के भगवान थे? डोर्स के, ओपनिंग के, क्लोजिंग के, सनराइज के, सनसेट के. Alright? He had one face and looked forward to the coming year and bid farewell to the preceding one. It was named January. उनका एक ही फेस था और वो आने वाले साल की तरफ देखते थे और पीछे वाला जो बीत गया है साल उसको गुड बाय बोलते थे. That is why the first month was named as January because January के बाद ही बाकी सारे मंथ जो है वो फॉलो होंगे. Clear? Taking its title from the Roman festival February, we get the second month of the February. February 15 was the day when Romans celebrated the festival of forgiveness of sins. यानी कोई अगर कोई गलती करता है, कोई पाप करता है, सिंस मतलब पाप, ठीक है ना, किसी ने कोई इविल काम किया हो तो उसको उस दिन माफी दे दी जाती थी. सो दैट पर्टिकुलर डे वाज सेलिब्रेटेड एज फॉरगिवनेस ऑफ सिंस. तो वहां से नाम डिराइव हुआ फेब्रुअरी. ओके, since February means to purify, this was a time when housewives looked forward to their spring season's cleaning up task. Therefore, this month was named February. ठीक है, और फेब्रुवरी में लोगों का मानना था कि क्योंकि सब अपने पापों से मुक्त होकर बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं तो घर भी बिल्कुल साफ सुथरा और स्वच्छ हो जाना चाहिए. स्प्रिंग सीजन का टाइम है जो कि अभी भी सेम है, राइट? फेब के महीने में ही हम वसंत ऋतु मनाते हैं, स्प्रिंग सीजन मनाते हैं. सो दिस इज हाउ फेब्रुवरी गॉट इट्स नेम. मार्च डिराइव्स फ्रॉम द नेम ऑफ मार्स. ठीक है, द रोमन गॉड ऑफ वॉर. सो मार्स इज द नेम ऑफ नॉट ओनली अवर प्लैनेट, हमारे प्लैनेट्स में से भी मार्स इज द नेम ऑफ प्लैनेट, बट यहाँ जो मार्स की बात हम कर रहे हैं ये एक रोमन गॉड है, द गॉड ऑफ वॉर, यानी युद्ध के जो देवता हैं उनको मार्स बोला जाता है रोमन कल्चर में. उनके नाम से नाम आया मार्च. He was a fierce warrior compared to thunder and lightning. It was the first month of the old Roman year, since the third month in the new calendar was associated with blistering season in Rome. It was called March. So क्योंकि ये जो थर्ड मंथ था ये ऐसे टाइम पे आता था जब धीरे धीरे गर्मी पड़ने लगती थी, काफी ज्यादा ब्लिस्टर्स आने लगते थे, एक जंग होने लगती थी. ठीक है, ऐसा लगता था जैसे एटमोसफेयर में एक दूसरे के साथ जंग कर रहे हैं लोग. So that is why this was named as March. April was originally the Roman month April, whose name was probably derived from April, which in Latin means to open. April का मतलब होता है to open.
Since the Romans experienced opening and blooming of birds and flowers, colors and happiness during this time, they named the fourth month as April, the opener of the gates of spring season. रोम में इस महीने यानी अप्रैल के महीने में नई कलियां खिलती थी, नए फ्लावर्स आते थे, एवरीथिंग वाज फ्रेश, flowers are blooming everywhere, so it is an arrival of new beginnings. So that is why they named this particular month as April. All right. May, the fifth month, was named after Maya, the goddess of fertility. She was the daughter of Atlas, who believed to rest the entire world on his shoulders. Clear? Then June is named after goddess Juno, the bright and beautiful wife of Jupiter. जुपिटर हैं, उनकी वाइफ का नाम है जूनो, एंड जूनो जो है उनके नाम पर जून मंथ का नाम रखा हुआ है. She was the chief Roman goddess or the center of power. Clear? She would ride a chariot. Chariot मतलब रथ. ठीक है? She would ride a chariot drawn by beautiful and bright peacocks. June, being a month in the middle of the year and very bright too, was named after her. क्योंकि जून का महीना जो है साल के बीच में आता है, ये ऑलमोस्ट हाफ कर देता है महीनों को. दैट इज वाई इट वॉज नेम्ड आफ्टर जून गॉडेस. ऑलराइट, गॉडेस जूनो के नाम पे जून मंथ हुआ. अब आते हैं सेवेंथ मंथ यानी कि जुलाई. The seventh month of the year, July, is named after great Julius Caesar, who was born in this month. जूलियस सीजर इस महीने में पैदा हुए थे, इसीलिए उनके नाम पर ही जुलाई मंथ को रखा गया. दो अर्लियर दिस मंथ वाज कॉल्ड क्विंटाइल्स, दैट टाइम द फिफ्थ मंथ, बट सीजर रीनेम्ड इट आफ्टर हिमसेल्फ. मतलब पुराना जो एंशिएंट रोम में जो कैलेंडर था उसमें जुलाई नहीं था, तब क्विंटाइल्स बोलते थे, बट लेटर ऑन जूलियस सीजर ने अपने नाम के अकॉर्डिंग जुलाई का महीना जो है स्टार्ट किया, ये नाम को रीनेम कर दिया, नाम को बदल दिया. जूलियस सीजर was succeeded by his adopted son Octavius. So, since the people of Rome addressed Octavius as Roman emperor, Augustus, therefore, the name of the 8th month of the new calendar, was dedicated to him. It was given the name August. Augustus also took a day from February and added it to the month so that this month would have the same number of days as Julius Caesar, his adoptive father. Alright, so August month पहले 30 days का ही होता था, but later on because ऑगस्टस के नाम पे अगस्त मंथ आया, वो उनके अडॉप्टिव फादर है, तो उन्होंने फेब से एक दिन जो है अपने पास ऐड कर लिया. And now August also started having 31 days. You know now August and July are consecutive months and both have 31 days. Right? September comes from the word septa. Septa means 7. This month was at the 7th position in the earlier calendar, therefore it is called September. 7th position में पहले वाले कैलेंडर में था, पुराने कैलेंडर में, क्योंकि पहले अगर हम ध्यान से सोचें तो पुराने कैलेंडर में पहले 2 मंथ्स हुआ नहीं करते थे. दैट इज वाई सितंबर यूज्ड टू बी इन द 7th पोजीशन, राइट. लेकिन अब वो 2 मंथ्स ऐड होने की वजह से सितंबर थोड़ा सा आगे चला गया और अब सितंबर क्या था, 9th मंथ है. बट दे डिड नॉट चेंज द नेम, दे केप्ट द नेम एज इट इज, दैट इज सितंबर. Even though it is 9th month of the year now, it is still referred as September. ठीक है, 9th month होने के बाद भी हम उसे पुराने नाम से ही बुलाते हैं. Running on the similar lines of the story, October, it is derived from the word octa, means 8. In mathematics, you must have studied the different kind of shapes. So octagon, याद करिए, a shape which has 8 sides is known as octagon. So October was named because it was 8th month in the previous calendar. जो पुराना कैलेंडर था उसमें अक्टूबर 8th मंथ हुआ करता था, बट क्योंकि जूलियस सीजर ने 2 मंथ्स ऐड कर दिए थे, जनवरी और फरवरी शुरू में, तो मंथ्स की काउंटिंग चेंज हुई एंड अक्टूबर शिफ्टेड फ्रॉम द 8th पोजीशन टू द 10th पोजीशन, बट द नेम स्टिल रिमेन्स द सेम. Yet its name was also retained, वही नाम से पॉपुलर है.
November was the ninth month as per the earlier calendar. Its name therefore was derived from Novem, meaning nine. Despite being the 11th month in the new calendar, the name of this month was also retained. Here, similarly, जैसा कि सितंबर अक्टूबर के साथ हुआ, वही चीज नवंबर के साथ भी हुई कि दो नया कैलेंडर बनने के बाद जो नंबर है, पोजीशन है, वो चेंज हो गया. नाउ एक्चुअली नवंबर इज द सेकेंड लास्ट मंथ, 11th पोजीशन पे आता है, 11th मंथ है, लेकिन फिर भी नाम वो पुराने के हिसाब से ही जाना जाता है. Once again, as per the earlier Roman calendar, December was the 10th month because the Latin word decem means 10. Deca या decem दोनों का मतलब क्या होता है? 10. और जो पुराना कैलेंडर था उसमें 10 ही महीने होते थे. December was the 10th month, तो उस हिसाब से दिसंबर बोलते थे. बट नए कैलेंडर में आने के बाद दिसंबर 12th पोजीशन पे चला गया, राइट? दो प्लेसेस स्किप करके आगे बढ़ गया. सो दैट इज द रिमेन. But still, even after shifting, the month retained its name and it was unchanged. This is how the months of our present day calendar got their names. इसी तरह से हमारे जो प्रेजेंट डे कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर हम फॉलो करते हैं, उसके नाम हमें पता चलते हैं. ऑलराइट, इंटरेस्टिंग है ना? कितनी सारी बातें पता चली, कैसे कैसे नाम पढ़े, राइट? ट्रू. ऐसे ही बेटा, लाइक द इंग्लिश कैलेंडर, इन हिंदी ऑल्सो वी हैव डिफरेंट नेम्स ऑफ द मंथ्स. ठीक है? सो यू कैन फाइंड इट आउट. अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टास्क. So try it out if you can ask your elders and find out the names in Hindi as well. Now, as we have completed the chapter, let's move towards the exercises. Okay? So first exercise is take the correct option and we need to read the statements, and whatever is the correct statement, we need to take the suitable option. Let's begin. First one, a year has 12 months. 11 months, 12 months, 20 or 8 months. So nowadays, since it's 12 months, so we will say a year has 12 months. Clear? 12 महीने होते हैं. Second one, 6th month of the year. कौन सा month 6th number पे आता है? हम current calendar की बात कर रहे हैं. So the 6th month is June. So option B is correct. March derives its name from Mars, Earth, Janus or Jupiter. So March derives from Mars, the god of war. So Mars से आया तो March. Fourth one, Octavius was the son of Socrates, Julius Caesar, Shakespeare, or Antigone. So the answer is Julius Caesar. Okay. All right. So children, now it's time to do exercise number B, that is fill in the blanks. We have to add suitable options or suitable words to complete these sentences. So let's try out. The first one is October has derived it from the word Octavius. All right, Octavius, right? And यहाँ पे octa का मतलब होता है 10. अभी 10th month है, but actually previous calendar में it was 8th month. ठीक है? But अभी नाम हमने change नहीं किया है. New calendar में it is following the same name. Clear? So octa means 8, right? 8 से octa, and because though it has changed, month का positioning change हो गया है, but still we are not changing the name. It has retained the old name. November was derived from the word novem, meaning 9. novem का मतलब 9 था और पहले नवंबर का पुराने कैलेंडर में पोजीशन 9th मंथ का होता था. That is why it was named as November, and अभी भी नए कैलेंडर में नवंबर के नाम से ही जानते हैं. Third one, our present calendar is known as the Gregorian calendar. Gregorian, right? Pope Gregorian के नाम से है तो Gregorian calendar. Fourth sentence, March derives its name from Mars, the Roman god of war. ठीक है? Mars, the Roman god of war. And last, fifth statement, June is named after the goddess Juno, Jupiter की wife, right? She is a beautiful, beautiful queen, you can say. All right, goddess बोला जाता है, बहुत खूबसूरत है, तो उनके नाम पे है June, goddess Juno. Clear? So with this we are done with the
exercise. Now let's proceed. Now we can see match the months to their origins. मतलब यहाँ पे original names है जो पुराने प्राचीन कैलेंडर में यूज होते थे, और यहाँ पे अभी करंट जो प्रेजेंटली जो हम नेम्स मॉडर्न नेम्स है वो हैं. So let's match them. So let's begin. January. Let's find out. January comes from Janus. So match with Janus. February comes from February. March comes from Mars. Alright. April comes from April. May again comes from Maya. June comes from Juno. What is Juno? July comes from Julius Caesar. You remember he was born in this month, and that is why he had renamed the month. August comes from Augustus. September comes from Septa. Alright. October comes from Octa or Octavius. Right. November comes from Novem, that means 9, and December comes from Decem, that is 10. Clear? So with this we are done with the matching also. So I hope you have noted this. Now let's move further. Next exercise says we need to tick the correct statements. जो सही statements है उसमें हमें सही का निशान लगाना है. We have to tick them. And the statements which are false, we need to cross them out. इनको हमें काट देना है. ठीक है. First one, our present calendar is known as the Gregorian calendar. हमारे अभी का जो कैलेंडर है उसको हम Gregorian calendar बोलते हैं. Yes, it is true. Next, Julius Caesar was the great American emperor. No, he was not an American emperor. He was a Roman king. वो Roman emperor थे. So that is why this is wrong, because he was a great emperor in the city of Rome. ठीक है. Now third one, there were 12 months in a year in the beginning. बिल्कुल शुरू में क्या 12 महीने थे? नहीं, बिल्कुल शुरू में 10 महीने थे. तो this is wrong. अभी आज की डेट में जो कैलेंडर है उसमें 12 महीने होते हैं, but previously it only had 10 months. बाद में जनवरी और फरवरी को हमने ऐड किया है. Fourth one, Julius Caesar was the son of Augustus. Julius Caesar son of Augustus थे. No, this is false. Next, fifth one, Janus was the god of war. No, again this is wrong, because Mars was the god of war. So again this is false. Clear? Alright children, now it's time to discuss the question and answers. Let's proceed towards exercise number E. Clear? Answer the following questions. First, which years were not to be considered as leap year? Any year which was not divided by 400, which were not divisible by 400, was meant to be a leap year. Right? Next, why was January named after Janus? Janus was the god of new beginnings as per the Roman tradition. अगर हम रोमन परंपरा को पढ़ेंगे तो उस कल्चर में Janus was the god of new beginnings, doors, sunrise, sunshine. That is why it was a one-faced god who looked towards the beginnings, and that is why January, being the first month of the year, was named after Janus. Clear? Third one, what was the problem with Caesar's calendar? Caesar की कैलेंडर में क्या प्रॉब्लम थी? याद करो जरा. सीजर ने एक कैलेंडर डेवलप किया था, डिजाइन किया था, लेकिन द कैलेंडर हैड अ मेजर प्रॉब्लम जिसमें लीप ईयर का इशू आ रहा था. जो टाइम है वो ठीक से नहीं बैठ रहा था. The months were not properly, the days of the months were not properly divided, right? So division में problem था. The days of the months were not properly divided, which was later on solved by Pope Gregorian, right? So that was the problem with Caesar's calendar. One day का issue आ रहा था, right? Next, fourth one, when Caesar's calendar amended and by whom? Caesar's calendar was later on amended by Pope Gregorian during the 15th century. ठीक है, 15th century में Pope Gregorian ने इसको दोबारा amendment किया था, दोबारा ठीक किया था. Clear? Alright children, so now let's move to the next question. That is fifth one. What is the story behind the month of February?
So the month of February earlier in the Roman Empire, on February 15th, the people of Rome used to celebrate the festival forgiveness of sins. February was considered to be the month when people used to forgive the people of their sins, है ना? जो लोग थे उनके जितने भी पाप थे उनको माफ कर दिया जाता था, and that is why it was named as February. All right, the festival of February was done this time, and that is why it was named as February. Sixth one, what is the April? What is April the opener of? How? April is considered to be the opener of spring in Rome. In Rome, and particularly in the city of Rome, April was considered to be the season when new flowers and new birds started blooming. मतलब spring season को वो लोग April month में experience करते थे रोम में, and that is why April was a kind of starting of new beginnings, initiating was there. So that is why it is considered to be opener of spring, and that is why April is called the opener month. All right. Now, seventh one, how did the month of August get its name? So Julius Caesar had a adoptive son whose name was Octavius. Later on, he was uh, given the position of the emperor after Julius. So Julius was succeeded by his son Octavius, and the people of the Rome named him Augustus. So from that name, Augustus, the month of August was named. Okay. So in simple words, you can write that the name of the August month was derived from the adoptive son of Julius Caesar, that is Augustus. Clear? So children, with this, we are done with the exercises. We have completed another chapter of your class 7 book. I hope you have understood the chapter quite well. Quite an interesting chapter. बहुत कुछ नया जानने के लिए मिला हमें, है ना? कितनी सारी मिस्ट्रीज सॉल्व हो गई, सी कितना सारा इन्फ्लुएंस रहता है चीज़ों पे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स के बारे में हमें पता चलता है, डिफरेंट ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है ना? सो समथिंग न्यू वी आर लर्निंग ईच एंड एवरी डे. So keep on learning like this. I will again meet you with a new video, with some new chapter, with something interesting and engaging. Bye bye and take care. Stay tuned for the upcoming videos.